Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and we are going to analyze the Hindu newspaper for today, that is 23rd of August 2022. आज का the Hindu newspaper हम decode करने जा रहे हैं. I hope you all have read the newspaper yourself because this is a revisionary lecture for all of you. The most important articles from the Hindu newspaper, we are going to decode them. We are going to start with this question bank today. सबसे पहले हम question bank से start करते हैं. Before starting the analysis, every day we are going to solve 2 questions. Okay, let's get started. शुरू करते हैं आज का lecture. Which of the following committees had proposed privatization of PSU banks? Narasimham committee, पीजे नायक कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी. सिलेक्ट द करेक्ट कोड. इसमें करेक्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है. इनमें से कौन सी कमिटीज हैं जिन्होंने पीएसयू बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात करी थी, प्रपोजल रखा था सामने. करेक्ट आंसर हियर वुड बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वेरी गुड, नरसिम्हम एंड पीजे नायक कमेटी. दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. Coming on to question 2, the sovereignty of India means no external power can dictate the government of India. Citizens cannot be discriminated against on any grounds. There is freedom of speech and expression for Indian citizens. तो जल्दी से बताओ इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. वेरी गुड, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर अगेन करेक्ट. ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है. All right, so chalo, let's move forward. The first important article here you can see is first there it's saying Ranganathetu bird sanctuary reopened. So basically this bird sanctuary has reopened. So here for prelims this article is important. They can give you the names of the bird sanctuaries and the locations. Then they will ask you which of the pair above given above is or are correctly matched. तो यहाँ पर आपको बर्ड सैंक्चुरीज का नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे, 1, 2 and 3. Then they will give you location over here, name of the states where they are located. Then they will ask you which of the above pairs are correctly matched. इसमें से कौन से correctly matched है. Okay, so here Ranganathitu bird sanctuary, basically it is located in the Mandya district in Karnataka. Please take out a map and mark it itself in the map itself. मैप निकाल लीजिए, मैप में ही फटाफट से मार्क कर लीजिए. तो रंगनाथितु बर्ड सैंक्चुरी जो है वो कर्नाटका में सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कावेरी. ओके, एंड इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी इन कर्नाटका. कर्नाटका की ये थर्ड लार्जेस्ट बर्ड सैंक्चुरी है. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ऑल्सो इन 1940. ओके, पॉइंट क्लियर. एंड इट इज नेम्ड दिस रंगनाथितु मीन्स it is the name of God Shri Ranganatha Swami, who is considered as an avatar of Lord Vishnu. तो हिंदुइज्म में, हिंदू रिलीजन में गॉड श्री रंगनाथा स्वामी के नाम पर इस बर्ड सैंक्चुरी का नाम रखा गया है, जो कि स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं. ठीक है, so that is the importance of this bird sanctuary. Coming on to the next very important article, again prelims के लिए काफी important. देखो these days now there is a very grave situation going on. One after the other new viruses are coming up. In prelims 2022 there were 2 questions on coronavirus itself. coronavirus के ऊपर तो भैया क्वेश्चन आ ही गया 2022 में. ठीक है, even in 2021 there was a question on the vaccine. All right, this year also vaccine के ऊपर question था. Now yesterday we study about the lumpy skin disease. Right, in the yesterday's Hindu newspaper we studied about the lumpy skin disease. Now this tomato flu, so plus monkey virus is going on. We have studied about that also. Separate lecture हमने monkey virus पे बनाया है. तो इन तीनों के बारे में ना you have to study in detail. All right, because prelims के लिए it's going to be really important. So what is this tomato flu? Basically it's a flu which is found in children aged 5 years of age. Tomato fever is a very contagious and rare disease. It's of a viral nature. It is found in humans. The origin of this disease has not been detected yet. Okay, but the after effect, or you can say the symptoms of tomato flu is just like dengue and chikungunya. जैसे चिकनगुनिया में पूरे जोड़ों में दर्द होता है ना, हर जॉइंट में पेन होता है. डेंगू में फीवर हाई हो जाता है, एपेटाइट कम हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग, नोशिया. ऑल ऑफ दोज आफ्टर इफेक्ट्स एंड सिम्टम्स आर सेम सिमिलर इन टोमेटो फ्लू ऑल्सो. एंड दिस फ्लू इज सेट टू अफेक्ट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5. जो 5 साल या उससे कम की एज के बच्चे हैं ना, उसमें ये डिटेक्ट किया जा रहा है टोमेटो फ्लू. उन बच्चों में डिटेक्ट किया जा रहा है. Why its name is tomato flu? Because the children who are infected by tomato flu, there on their skin there are rashes which are just like tomatoes. जैसे लाल लाल टमाटर होते हैं ना, उसी शेप के गोल रैशेस बच्चों के स्किन पे आ जाते हैं. तो इसीलिए इसको टोमेटो फ्लू नाम दे दिया है. ठीक है, what is the treatment? Basically you have to self limit yourself. Okay, क्या होता है इसके अंदर, आपको रेस्ट लेना है. यू डू नॉट हैव टू रोम अराउंड हियर एंड देयर, जस्ट रिलैक्स,
rest at home, drink lots of water because dehydration occurs in this flu. So coconut water आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पिलाओ. Fluid intake should be increased so that you can fight dehydration. Then you have to basically keep yourself hygienic in an hygienic environment. आपको आपके आसपास ना सैनिटाइज्ड और हाइजीनिक environment में रखना है इस फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए. प्लस यू हैव टू बेसिकली get your medical checkup time to time. Okay. And another important point is that medicinal support is very important. ये नहीं कि घर के देसी इलाजों से आप अपने आप को ठीक कर लोगे, थोड़ा मेडिसिनल सपोर्ट भी आपको इसमें लेना है. प्लीज get in touch with a doctor if your child is infected or any other child around you is infected with this particular disease. All right. Next important article, India-Iran sign pact to aid movement of seafarers. So India and Iran have signed a memorandum of understanding that facilitates the movement of seafarers. Now what is the meaning of seafarers? ये भी आपका prelims के लिए बहुत important है. Seafarers are individuals who travel by seas. Those are seafarers. Okay, वो लोग जो कि sea के रास्ते से travel करते हैं उन्हें हम seafarers बोलते हैं. Okay, and the memorandum of understanding has been signed between the Minister for Ports, Shipping and Waterways of India and the Minister of Roads and Urban Development of Iran. That you have to remember. They can ask you this question in prelims, that the MOU on the movement of seafarers recently has been signed between which two nations? They can give you four options: Australia, India, America, India, China, India, and Iran and India. So the correct answer would be India and Iran. All right. तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं. तो प्लीज यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड ओके, सो दैट थ्रू क्वेश्चन फॉर्मेट ऑल्सो यू कैन रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेक्स्ट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेपर 3 एंड प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. केरला हैज लॉन्च्ड केरला सवारी विच इज एन ऐप, अ न्यू ऐप, बेसिकली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऐप है. इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ऐप. दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, दैट इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विच स्टेट. देन दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस. तो उनमें से एक केरला होगा, केरला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ओके, सो प्लीज फ्रेम दिस क्वेश्चन इन योर करंट अफेयर्स नोट register and please take a cutout of this article and stick it on that page जहां पर आप question लिख रहे हो. That would help you immensely during your revision. So Kerala has launched Kerala Savari app to ensure decent service to the passengers at fair remuneration to auto taxi workers. It will be operated by Motor Workers Welfare Boards under the Labour Department. So they can ask you about the department also. Remember, it's the Labour Department. It's a sale of online service which is provided by Kerala government to senior citizens, women and children. इसमें ना total 8% service charges होंगे, ठीक है. Basically in the Kerala Savari the charges will be an 8% service charge. Out of this 8%, 2% will be used in the implementation of the scheme by providing incentive to drivers and passengers, and 6% will go to the technical partners which will develop this app and look out after the smooth functioning of this particular app. And the drivers who will be driving the cars, the police clearance certificate is mandatory for all those drivers and proper training will be given to them. All right, another important point is that a panic button system has been introduced in the app. So both the drivers and passengers, both of them, they have the panic button system, and whoever uses the panic button system, they're basically they can use it privately. उनके information वगैरह सब anonymous रखी जाएगी, उनके information को protect करके रखा जाएगा. And when one presses the button, there is an option also. You can select the police, fire force and motor vehicle department. These 3 numbers will be given, and there will be a GPS also which will be installed in the vehicles. 24-hour call center support मिलेगा. State of the art call center is functioning at the district office of the Motor Workers Welfare Board. So proper safety of both passengers and drivers have been ensured by Kerala government in building up this Kerala Savari app. All right. So this was all about today. हमने 10 मिनट में सारे important articles हिंदू न्यूज़पेपर के आज हमने कवर कर लिए हैं. I hope you enjoyed reading these articles. Now please revise them and only then go to sleep. Okay? ऐसे ही नहीं सोने जाना, इसको अच्छे से revise कर लो, उसके बाद आराम से सोने चले जाना. All right? So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in this lecture.